Very good morning, students. Welcome to your science class 7th. We are going to start a new chapter today, that is chapter number 11, transportation in animals and plants. Before moving ahead with the chapter, I request you all to please send your queries and doubts, if you have any, to the class email ID, and I'll be resolving your queries in upcoming videos. Chapter number 11, transportation. We have already learned that all the organisms need food, water and oxygen for survival. They need to transport all these things to the various part of their body. And further, animals also require to transport their waste, body waste, from the parts where they are manufactured to be removed out from the body. So we have wondered how this all can be achieved, as human being a very complex organism. Have a look at figure 11.1. Can you see this? See, this figure is showing the circulatory system. It is showing some parts with the blue colors and other with the red. So whatever the blue portion you are seeing in the body part, it is actually your veins which carry impure blood. Impure blood की वजह से इसको हमने blue color से denote किया है. And your arteries are carrying pure blood, and it is showing with the red color. Can you see this? Coming back to the theory part, you have see the heart and the blood vessels. They function together to transport the system, and together they form the circulatory system. In this chapter, we are going to learn about the transportation of the substances that takes place in humans and animals, and as well as in plants. Coming to 11.1, the circulatory system. The first element which we are going to learn about in circulatory system is your blood. What happens when you get a cut on your body? So blood flows out. आपकी body से blood आता है ना? But what is blood? So blood is the fluid which flows in the blood vessel. Blood वो fluid है जो आपके blood vessels में flow करता है. वो किन किन चीज़ों को transport करता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में से निकलते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट ऑल्सो कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स द वेस्ट फॉर द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. सो दिस पैराग्राफ कम्स अंडर योर फंक्शन ऑफ ब्लड. If the question comes, what are the functions of blood? So you have to write all these points. Okay. नेक्स्ट इज हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज. अब ब्लड कैरी कैसे करेगा सारे सब्सटेंसेज, क्योंकि ब्लड तो एक लिक्विड है, तो उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं उसके अंदर. सो द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. प्लाज्मा हम किसको कहते हैं? जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है. इसके अंदर एक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम आरबीसीज कहते हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल्स which contains a red color pigment, and the pigment we called as hemoglobin. Hemoglobin, what is the function of hemoglobin? It binds with the oxygen, तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और पूरी बॉडी में आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. ये हेल्प करता है हीमोग्लोबिन. ठीक है. और इसी की वजह से इसका कलर कैसा होता है? रेड. इट अपीयर्स रेड इन कलर. And it will be very difficult to provide oxygen efficiently to all the cells if the body is without hemoglobin. Imagine you don't have hemoglobin content in your body, so you cannot inhale or exhale properly. आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल नहीं होगा, है ना. तो उसके कारण क्या है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है. जब भी हम अपने HB काउंट कराते हैं तो वी जनरली काउंट द hemoglobin content in our body. Next type of cells are your white blood cells. The blood also contains WBCs which fight against the germs that may enter into your body. हमारी बॉडी के अंदर जो भी germs, जो भी infections enter करते हैं, हम ये WBC उससे fight करते हैं. So there is a story about Bujo that he fell down while he was playing a game and his knee got injured. So ultimately blood उसकी बॉडी से निकलेगा, उसके नी से निकलेगा. उसके थोड़े टाइम बाद उसने क्या नोटिस करा कि जो उसकी ब्लीडिंग थी वो स्टॉप हो गई, ब्लीडिंग होना बंद हो गया और एक डार्क रेड कलर का क्लॉट बन गया उस जगह पे. सो ही वॉज पजल्ड अबाउट दैट व्हाट द क्लॉट इज, कि ब्लड कैसे रुक गया और क्लॉट क्यों बना. सो द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी दैट इन द ब्लड विच इज कॉल्ड प्लेटलेट्स. फाइन. तो क्लॉट क्यों बना? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन योर ब्लड. The next topic which we are going to cover is your blood vessels. अभी हमने blood vessels के बारे में पढ़ा 11.1 फिगर में. उसमें दो टाइप की vessels थी, your arteries and veins. Fine. So there are different types of blood vessels in our body, and when we inhale
oxygen. So our lungs fill with oxygen, freshly supply of oxygen is there. Oxygen has to be transported to the rest part of the body also. Similarly, the blood picks up the waste material including your carbon dioxide जो आपके lungs में से निकलती है, वो भी एक waste ही है जो आपकी body से बाहर निकलता है. So this blood has to go back to the heart to transport it to the lungs for the removal of carbon dioxide also. तो ये किस तरीके से परफॉर्म होता है, क्या पैसेज रहता है? तो इसमें ये दो टाइप की ब्लड वेसल्स वर्क करती हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जिनको हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं. तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स? जो हमारी आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, हमारे हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती हैं और सारी बॉडी पार्ट्स में जाती हैं और वहाँ पे उनको सप्लाई करती हैं. सिमिलरली जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके कैसी वॉल्स होती हैं, बड़ी थिक वॉल्स होती हैं, क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर होता है हार्ट से जब ब्लड रिसीव होता है तो बहुत तेज़ होता है, उसका ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड it is at the high pressure, so they have thick elastic walls. A question can come in your exam, why do arteries have thick elastic walls? So the answer to this question is because the blood flowing from the heart is rapid and at a high pressure, and arteries are the vessels which carry oxygenated rich blood from the hearts to all parts of the body, so they are supplied with the thick elastic walls. Fine. In order to understand these blood vessels, we are going to perform an activity, that is 11.1. You can place your middle and index finger at your right hand on the inner side of your left wrist and you can feel some throbbing movements. एक बर्प की टप टप की साउंड आती है. So what do you think about this throbbing की कैसे होता है? It is called as pulse. हम pulse check करते हैं हाथ टच करके. Can you see this image? The doctor is checking the pulse of the person. So due to the pulse is about the blood flowing in the arteries, you can actually count the number of pulse beat in 1 minute. Generally the pulse beat ranges from 72 to 80 beats per minute in a healthy person. Please underline the definition of a pulse rate. The number of beats per minute is called your pulse rate. A resting person usually has a pulse rate between 72 to 80 beats. Fine, can you see this? This is how we can calculate our pulse rate. Next is we are going to talk about veins. Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. Fine, this is the basic difference between your arteries and veins. वेन्स क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं सारे बॉडी पार्ट से और कहाँ लेके जाती हैं उसको? हार्ट के पास. यहाँ पर ये वेन्स होती, इनकी थिन वॉल्स होती हैं और देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स. इसमें कुछ वॉल्व्स होते हैं जो क्या अलाउ करते हैं हमारा जो ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है वो फ्लो करे सिर्फ हार्ट की तरफ को ही, टुवर्ड्स हार्ट ओनली. Can you see this image? This image is clearly showing your arteries towards the heart और heart से pure blood निकल के आपका इधर आ रहा है. Further it is being divided into capillaries. We are going to learn about the capillaries in the next paragraph. Do you see the arteries divide into smaller vessels in this figure? Yes, the arteries is getting divided into smaller vessels and these are further dividing into more smaller. On reaching the tissues, they divide further into extremely thin tubes that are called capillaries. So capillaries are basically very thin tubes. Fine. So these capillaries join up to the veins from which they empty into the heart. ये आगे जाके किस में करती हैं join? Heart में. Fine class. So we'll be talking about heart and its functioning in the next video. Till then, go through all these points, all these chapter properly because this is very important. And if you have any doubts, send it to the class email ID. And this is all for today's lecture. Thank you and have a nice day, class.